Hello students, welcome back to online English class. This is Anju Beniwal and today we are going to revise the poem The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. First of all, let us discuss the central idea of the poem. The central idea of the poem is about the choices one makes in life at every stage, whether it is education, career, or marriage. Every person has to make some choice. We always have two options, whether to do something or not to do something, whether to select this one or that one. Okay, so we have to make a choice at every step in our life. Of the several options available, one must choose only one. After a choice has been made, one has to keep going on the chosen path which leads to other avenues. Whenever we make a choice, we have to follow that path और वो रास्ता हमें जहाँ ले जाता है वहाँ हमें जाना होता है. There is no possibility of returning to the point where the choice was made and no reversal can take place. कोई रिवर्स गियर नहीं होता. एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया किसी ऑप्शन को, तो उसके बाद लाइफ में हमारे पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता. वी हैव टू डिसाइड वंस. समटाइम्स वन माइट रिग्रेट द चॉइस. कई बार अपने चॉइस पर रिग्रेट, पछतावा भी करना पड़ता है, बट वन हैज टू लिव विद इट. नाउ लेट अस डिस्कस द समरी. The narrator of the poem was walking in the yellow woods. Yellow woods means the jungles, and it was the autumn season. The leaves of the trees had turned yellow. Okay. He reached a point where the road branched off into two paths. Road branched off. Branched off means there was diversion in the road. Diversion होता है ना, एक रास्ता जा रहा है और आगे चल के वो उसी में से दो रास्ते बन जाएं. वही रास्ता एक इधर चला जाए और दूसरा दूसरी तरफ चला जाए. दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जन. ओके, तो ब्रांच्ड ऑफ हो गया, जैसे एक ट्री की ब्रांच होती है, एक इधर चली गई एक इधर. ऐसे ही रास्ता जो था वो टू डायरेक्शंस में मूव हो रहा था आगे. ही हैड टू चूज वन ऑफ देम. He looked at the two paths carefully and realized that one of them was more worn out than the other. Worn out means used frequently, used again and again. It seemed as though many travelers had been on that path before. The other path had a thick undergrowth. Undergrowth होता है bushes, trees के नीचे जो छोटे plants लगे होते हैं, झाड़ियां. Okay. The other path had a thick undergrowth and it was obvious that it was fairly untouched. Untouched means unused. देखने से ही पता चल रहा था कि इस रास्ते को बहुत ही कम लोगों ने यूज किया है. Both paths seemed to appeal the narrator. दोनों पाथ नरेटर को अट्रैक्ट कर रहे थे. However, since he could not travel on both, he chose the path that had not been traveled on much. दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था. He had to choose one path. और उसने कौन सा path choose किया? Which was less traveled by people. He thought he would perhaps come back another day to take the well-traveled path. और उसने सोचा कि शायद वो किसी दिन वापस लौट आएगा और ये जो वेल ट्रैवल्ड पाथ है जिसपे सभी लोग, बहुत सारे लोग चले हुए हैं, उस रास्ते पर भी चलकर देखेगा. बट ही न्यू दैट माइट नेवर हैपन एज द पाथ ही चोज नाउ वुड लीड हिम टू मैनी अदर पाथ्स. लेकिन उसे पता था कि ऐसा दोबारा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक रास्ता जो उसने चूज कर लिया है वो उसको दूसरे रास्तों पर, दूसरे मोड़ आएंगे रास्ते में और वो उन मोड़ को, किसी ना किसी मोड़ को सिलेक्ट करके आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा. एंड ही वुड नेवर बी एबल टू कम बैक.
The narrator ends on a thoughtful note. Ends means पोएम को एंड करता है. पोएम किस बात पे खत्म होती है? एक थॉटफुल नोट होता है, एक विचार वो रखता है हमारे सामने. और वो क्या विचार है? Many years later he will look back on this day. बहुत सालों बाद वो इस दिन को याद करेगा. And relate that his choice of the untraveled path had made all the difference in his life. और ये बात बताएगा किसी को कि उसने जो अपनी लाइफ में एक रास्ता चुना था, उसने उसके जीवन को किस तरह से पूरी तरह से बदल दिया है. So this is the summary of the poem, The Road Not Taken. Let us discuss some short answer type questions. Where does the traveler find himself? What problem does he face? Who is the traveler here? The poet Robert Frost is the traveler here. Okay. While traveling in a wood, the traveler finds himself at a forked road. Forked again, this type of road, जहां पे एक रास्ता एक तरफ जा रहा है और दूसरा दूसरी तरफ. As I had told you, this is the forked type of road. रास्ता जा रहा था, एक इधर मुड़ गया और दूसरा इस साइड मुड़ गया, तो ये forked type of road है. Okay. The two roads are very different from each other. The traveler faces the problem of choosing one of the two roads as he cannot travel on both at the same time. Problem क्या है traveler के सामने? He had to choose one of the two roads because he could not travel on both the roads at the same time. He finds the choice difficult because both roads seem promising. और दोनों ही रोड्स उसको अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं, प्रॉमिसिंग नजर आ रही हैं, इसलिए उसको चूज करने में डिफिकल्टी फील हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. अ येलो वुड. The phrase a yellow wood signifies that the poem is set in the autumn season. पतझड़ के मौसम में सेटिंग हुई है पोएम की. It is the time of the year when the leaves of trees turn yellow. This is called a yellow wood. Come to the next page. Next question. It was grassy and wanted wear. What is the meaning of this phrase? The road was full of grass and looked unused, looked fresh. Not many travelers had taken this road. Wanted wear means it wanted to be used. The passing there. This phrase means this refers to the people who had passed by or walked on that road. The passing there. लोगों का वहां से गुजरना. Next is leaves no step had trodden black. The leaves had not been walked on. Tread करना, कुचल देना या किसी चीज के ऊपर पैर रखकर चलना. तो लीव्स के ऊपर पैर रखकर कोई नहीं गया था, ट्रॉडन नहीं हुई थी. और अगर लीव्स पत्तों के ऊपर हम ट्रेड करें, वॉक करें, तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, कुचले जाने के कारण वो ब्लैक हो जाते हैं. तो यहाँ पर ट्रॉडन ब्लैक है. लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन वॉकड ऑन. हैड दे बीन वॉकड ऑन दे वुड हैव टर्न्ड ब्लैक. हैड दे मीन्स इफ दे हैड. If they had been walked on, अगर उन पर चला गया होता तो वो काली हो जाती, वो पत्ते काले हो जाते. How way leads on to way. This means that one road always leads to another. Next question. Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanza 2 and 3? स्टैंजा 2 and 3 में पोएट ने रोड्स को जैसे डिस्क्राइब किया है, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? फर्स्ट पार्ट है आपका इन स्टैंजा 2 and 3, उसमें कोई डिफरेंस है रोड्स में? इन स्टैंजाज 2 and 3 द पोएट डिस्क्राइब्स द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस between the two roads. He says that the second road was just as fair as the first one. It seemed more attractive and perhaps had the better claim since it had not been travelled on much. It was grassy and less trodden.
Now the next part of the question, is there any difference between the roads as the poet describes them in the last two lines of the poem? Is there any difference in the last two lines of the poem? Answer, in the last two lines the poet says that one of the two roads was less traveled by than the other, and his decision to take the road that only a few had traveled has made all the difference in his life. Okay. Next question. What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? Answer. In the last two lines, the poet declares that he chose to travel on the less trodden path, less used path, and that this choice has made all the difference in his life. It is not clear whether he regrets his choice और इज ग्लैड अबाउट इट. हमें ये बात क्लियरली पता नहीं चलती कि वो अपने चॉइस पर पछतावा कर रहा है या खुशी है इसके बारे में उसको. ही ओनली सेज दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. वो सिर्फ इतना कहता है कि इसी बात ने सारा डिफरेंस ला दिया है. इस बात से ही सब कुछ चेंज हो गया है. उसकी चॉइस ने सब कुछ चेंज कर दिया उसकी लाइफ में. द वर्ड डिफरेंस डज नॉट सजेस्ट वेदर इट वॉज गुड और बैड. हमें ये नहीं पता कि ये डिफरेंस उसकी लाइफ में जो आया उसकी चॉइस की वजह से ये गुड था या बैड था. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. You will learn the other questions and extract based questions from this poem. Thank you for watching the video.